की राजस्थान रॉयल्स के साथ आधिकारिक तौर पर जुड़ गया है। आपको याद दिला दें कि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के पहले सीजन की चैंपियन टीम है। जैसे बगैर किसी शोर शराबे या फेवरेट के तमगे के राजस्थान रॉयल्स ने यह कारनामा किया था, कुछ वैसा ही कारनामा इन दिनों खबरों की दुनिया में TV9 ग्रुप ने किया है। हमने न केवल सबसे बड़े नेटवर्क के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, बल्कि हिंदी पट्टी में हमारे चैनल ने कामयाबी की नई बातें लिखी हैं। तो लौटते हैं आज के इस बड़े ऐलान, इस बड़ी खबर पर, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के चेयरमैन रंजीत बट ठाकुर साहब। स्वागत है आपका सर। राजस्थान रॉयल्स के एस प्लेयर्स रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन और यंग टर्क रयान पराग, बहुत स्वागत है आप सभी का। और TV9 नेटवर्क के सीईओ वरुण दास भी हमको इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। उनको भी हम प्लीज सर, प्लीज कम। और आज हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि ये कोलैबोरेशन कहता क्या है। इस कोलैबोरेशन से इन दोनों पार्टीज को जो इसमें आपस में जुड़ रही हैं, उन्हें क्या उम्मीदें एक दूसरे से करनी चाहिए और क्या उम्मीद करनी चाहिए तमाम दर्शकों को, तमाम क्रिकेट प्रेमियों को जो क्रिकेट को, आईपीएल को बहुत शिद्दत से देखते चाहते आए हैं और बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि कब ये सब शुरू होगा। सबसे पहले तो रंजीत ठाकुर साहब, आपके पास में आ रहा हूं यह समझने के लिए कि इस कोलैबोरेशन के बाद आपके जहन में क्या क्या है, क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप इस कोलैबोरेशन से, TV9 ग्रुप से? मैं TV9 ग्रुप इंडिया का इतने बड़े टीवी ग्रुप है, मैं तो बाहर से देख रहा था। एक दिन हमारा अगर कोलैबोरेशन होगा तो हम बहुत रीच मिल जाएगा। तो ये कोलैबोरेशन का ज्यादा कारण है कि हम लोग आदमी से इंटरेक्शन करेगा, रीच मिलेगा। और हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म है क्रिकेटर का नंबर 1 है। ये जो क्रिकेटर हमारा है, आप लोग तो 3 क्रिकेटर को अभी देखेगा, हमारा तो और भी क्रिकेटर है पूरा। ये लोग का जो डिसिप्लिन है, ये लोग का जो हेल्थ है, ये लोग का जो फिजिकलिटी है, ये चीज TV9 से अगर इतना लार्ज आदमी को हम लोग, इतना बड़े आदमी लोग को हम लोग स्प्रेड करे ये TV9 से, तो स्पोर्ट्स का लिए अच्छा है। बीइंग अ हेल्दी नेशन इज अ गुड नेशन। तो ये इसका लिए हम लोग का मेन आइडिया है ये कोलैबोरेशन का, कि वी गेन एंड स्प्रेड द न्यूज ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ एंड स्पोर्ट्समैनशिप थ्रू राजस्थान रॉयल्स। दैट्स आवर मेन इंटेंशन। वी हैव नो अदर इंटेंशन आउट ऑफ दिस। ग्रेट सर। अब मैं वरुण सर से ये जानना चाहूंगा कि वरुण सर, आप क्या दे रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को, TV9 ग्रुप क्या देने वाला है? Thank you, Gautam, and thank you very much, Ranjit. Welcome, guys, all the cricketers there. Seen you on screen many times. I think the question that you asked, Dinesh, is that why a news network is associating with IPL. Let me answer that first. I think in this COVID time, and I've spoken to hundreds of COVID patients myself, one of the primary weapons to fight against COVID is your mindset. You need to believe that you can win it, and therefore you need to be positive. There's a depression all over. There's an economic downturn. Things are going downward. Somewhere we have to make the U-turn and come back. And I feel that IPL has taken a great step. And IPL is not going to be cricket only. I think it's prelude to vaccine to COVID, to Indians. I mean, if all of us would be homebound and we get back home, we'll get back home and watch IPL, and our spirit and mood would be lifted. So that's one of the reasons that we thought that IPL is special this year. And cricket, of course, is a religion. You know, it's part of every Indian's DNA. And we are the largest news network. We are about people. So therefore, a fitment with IPL and cricket is what we thought is right at this point in time. And as far as Rajasthan Royal is concerned, I think there's a fitment of mine. What I heard from Ranjit, that beyond cricket, they do a lot of stuff. Their corporate social responsibility is one of the main agenda of their being. And we being a largest news network, I think there's a fitment of mine. And we look forward to be together longer than this IPL. And the second part is, you know, Rajasthan Royal, as you rightly said, was the first champion. And after that, I think they've been in the playoff for once, 2013, if I'm right. And even if when I look at the players of Rajasthan Royal, I mean, they've got stalwarts drawn from all over the world.
I don't personally think, without meaning anything, that there's no big names. The star cricketers of India is there in Rajasthan Royal. So I think that is where we would like to come in. We would mobilize the Indian fan following for Rajasthan Royal, TV9 Bharat being displayed on their chest. I think the Indianness we would add to Rajasthan Royal and be part of their journey in their quest to this championship. तो बहुत संक्षेप में उन लोगों के लिए जो इसकी हिंदी तर्जुमानी चाहते हैं, मैं बता दूं कि हमारे सीईओ ने अभी क्या कहा। TV9 ग्रुप के सीईओ ने कहा है कि ये कोलैबोरेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोरोना के समय जब ज्यादातर एक डिप्रेशन प्रिवेल कर रहा है, कहीं अवसाद है लोगों के दिल दिमाग में, घर में रह रहकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर से मूड को अपलिफ्ट कैसे करें। घर में रहकर सबसे ज्यादा आपको जोश के 7वें आसमान में ले जाने वाली कोई चीज रही है तो वो रहा है क्रिकेट। और क्रिकेट का जब एक बार फिर से आगाज हो रहा है आईपीएल के तौर पर, तो उसमें उस मूड अपलिफ्ट करने के दौर में TV9 भारतवर्ष भी आपके साथ हो, राजस्थान रॉयल्स के साथ हो और इस चैंपियनशिप के साथ हो, इस लिहाज के साथ, इस ख्याल के साथ ये कोलैबोरेशन किया गया है। और कोलैबोरेशन इस बात को लेकर भी किया गया है कि CSR के मामले में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में राजस्थान रॉयल्स अपनी भूमिका निभाता रहा है। TV9 भारतवर्ष उसकी भूमिका को और बृहत्तर आयाम देना चाहता है। लेकिन अब मैं आना चाहूंगा खिलाड़ियों पर, उन पर जिनकी पूरे देश की निगाहें हमेशा रही हैं और अब इस टीम से खेलते हुए उन पर निगाहें रहने वाली हैं। और इनमें सबसे पहले रॉबिन उथप्पा का नाम मेरे जहन में आता है। आधी क्रीज तक पहुंचकर उधर से आने वाले पेस बॉलर्स को भी इंटिमिडेट करने का मादा अगर किसी में है तो रॉबिन उथप्पा में। वरुण खुद भी एक बहुत बड़े क्रिकेट प्रशंसक हैं, बहुत दिलचस्पी के साथ क्रिकेट देखते हैं और कई बार मैं देखता हूं उनको आंकड़े और प्लेयर्स के कारनामे जुबानी याद रहते हैं। तो रॉबिन को लेकर आपके जहन में क्या है और अगर आप कोई बात रॉबिन से करना चाहें वरुण। Robin, I just have one question for you. If I look back, if I try to remember Robin playing IPL, predominantly what I see that he's playing for KKR. You played earlier for Mumbai Indian. I just need to know, how do you guys really align yourself with a new team? What motivates you? When you play for the country, the country is one team. But when you play for these different teams and then you don't belong to that region, how do you be part of that team? And what does align you? The owner, the people, or just cricket itself? Hi, Varun. Thank you for that question. I honestly believe it. I think one is the cricket that really makes you feel, that you belong to a side, and I think your desire. I think as an individual, the individual desire to win championships also is a big factor. And as far as cricket is concerned, or team sport is concerned, winning happens together as a unit. It doesn't happen individually. Yes, you can have individual success in a game or two, maybe 4 or 5 games if you've got a really good season going for you. But having said that, when you win as a team. So it's incredibly important for any individual, no matter how great he is, to be playing in the best interest of the team and to go out there and make sure that he adds value to the team. So I've been a strong believer of that. And for me, I've learned very early. I was one of the first, in my memory, if I'm not wrong, I was one of the first transfers that happened within the IPL back in 2008. So for me, that experience is something that actually changed my perception a lot about changing teams. The first transfer was difficult for me, but after that it was quite simple because I understood what it takes. It takes an individual to become more professionally minded to be able to make that shift from one franchise to the others. So I think my personal experience over the last 13 years has taught me how to move from one particular team to the other, making sure that you're giving your best to each team that you go into. Right, कमाल है। ये इस तरीके से आप अडॉप्ट करते हैं जब आप एक टीम से दूसरी टीम के लिए खेलने के लिए जाते हैं और हमेशा ये जहन में होता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करता है, लेकिन आप जीतते एक टीम के तौर पर हैं। रॉबिन का कहना यह है। रॉबिन, लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे है। मुझे याद है 2007 में आप लोगों ने हिंदुस्तान की टीम के तौर पर जब वो कप भारत के लिए लिफ्ट किया था, वहां से लेकर हमने आपको अलग अलग लीग्स में भी खेलते हुए देखा है। ये रॉबिन उथप्पा का वही टेम्परामेंट होता है हर जगह जब वो क्रीज पर जाते हैं, या कहीं वो पाते हैं कि कुछ ऊपर नीचे होता रहता है इस टेम्परामेंट में? टेम्परामेंट मैंने खुद एक्चुअली काफी चेंज किया था दिनेश जी। 2012 में जब मैं अपना टेक्निक चेंज किया था तो उसके साथ ही अपना टेम्परामेंट थोड़ा चेंज हुआ था। पर पिछले 2 साल से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ कि जितना भी क्रिकेट में आगे खेलूं
वो वैसे ही खेलूं जैसे मैं शुरू में खेलता आया हूँ। तो जब मैं इंडियन टीम में आया था, जिस टेम्परमेंट से पहली बार सेलेक्ट हुआ था इंडिया के लिए, तो उसी टेम्परमेंट से मैं क्रिकेट, बाकी का क्रिकेट जो है मेरे जहन में, जो मेरे शरीर में है, जो बाकी क्रिकेट है, तो मैं उसी तरह से खेलूं जो लोग पहचानते हैं मुझको। तो कोशिश यही जारी होगी, और इंटेंट यही होगी कि लोग जो रॉबिन को पहचानते हैं, जो इनिशियली रॉबिन को पहचानते हैं, जिस टेम्परमेंट से खेलता था, वो उसी रॉबिन को एक्सपीरियंस करेंगे और महसूस करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, और आप बहुत अच्छा करें, ये हमारी शुभकामनाएं। और हमने देखा जिस तरीके से आप हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में खुद को उतनी सहजता के साथ स्विच कर लेते हैं, वो मुझको लगता है वरुण के उस सवाल का जवाब देता है कि जब आप एक टीम से दूसरी टीम के लिए खेलने जाते हैं तो फिर आप अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं। लेकिन सबसे अहम डेलिकेसी एक मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, संजू सैमसन के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले रयान पराग, वरुण वो उन खिलाड़ियों में से जो नॉर्थ ईस्ट से यहां तक का सफर तय करते हैं और सबसे कम उम्र में 50 स्कोर करने वाले प्लेयर्स में से एक रहे हैं। आपका कोई सवाल उनके लिए? नहीं, सवाल तो नहीं है, बट मुझे तो लगता है ही रिप्रेजेंट्स नॉर्थ ईस्ट। रेयान, आप पहले प्लेयर होंगे नॉर्थ ईस्ट से जो आईपीएल खेल रहे हैं, और आपसे पहले कोई खेला था? एक्चुअली मैं दूसरा हूँ। अबू नचीम भैया खेले थे फॉर मुंबई एंड आरसीबी, सो मैं सेकंड प्लेयर। वेरी नाइस रेयान, और आप यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 50 इन आईपीएल लास्ट ईयर। एंड हम लोग सब जानते हैं बहुत सारे प्लेयर, आई थिंक बुमराह वगैरह, उन लोग तो पहले पहचान उनका आईपीएल में ही हुआ था, और हम देखना चाहते हैं आगे चल के आप इंडिया कैप भी डॉन करो, और उम्मीद रहेगा हमारे आपसे। और उससे पहले आप राजस्थान रॉयल को प्लेऑफ में ले जाइए तो रंजीत और मैं पार्टी दोबारा एक करूंगा वहाँ। और इस खुशगवार नोट पर एक सवाल मेरा संजू सैमसंग से भी है। संजू, सबसे ज्यादा फेयर्ड क्रिकेटर्स जो हैं इस दौर के, उनमें आपका नाम लिया जाता है। 130, 40, 50 के स्ट्राइक रेट से जब आप बल्लेबाजी करने आते हैं तो बस सामने वाला ये सोचता है कि अब इससे निजात मिले किसी तरीके से, तो वो उस परफॉर्मेंस को नजर ना लगे, उसको आप कैसे चलता रखते हैं? हाउ डू यू मैनेज इट गोइंग? पहले तो भैया थैंक यू फॉर द पार्टनरशिप। आई थिंक वी ऑल आर वेरी हैप्पी टू हैव द पार्टनरशिप विद यू गाइस। आई थिंक वी हैव, I hope Ranjit sir is discussing a long partnership with TV9. And answering your question, I think भैया मैंने अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सब पहचानना जरूरी है। तो मैंने अपना स्ट्रेंथ पहले पहचान रखा है कि मेरा स्ट्रेंथ अटैकिंग है और मैं थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर हूँ, तभी मेरा बेस्ट बाहर आता है। तो मैं हमेशा हर इनिंग्स में अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करता हूँ और अपने स्ट्रेंथ में स्टिक ऑन करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली संजू, मुझे तो लगता है अपना वीकनेस सबसे पहले, लिमिटेशन सबसे पहले पता होना है, उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो। जैसे आप शायद बहुत छोटे थे, हम लोग देखते थे एक प्लेयर रवि शास्त्री खेलते थे, उनको सिर्फ एक चपाती शॉट आता था और उसी से ही वो स्कोर करते थे। बीच में एक बार सचिन तेंदुलकर जब ऑस्ट्रेलिया दौरान में वो बार बार कॉट बिहाइंड हो रहे थे, तो एक 200 मारा था उन्होंने, एक भी ऑफ साइड में ड्राइव भी नहीं मारा। तो लिमिटेशंस पता होने से उसके बाद स्ट्रेंथ में ग्रो करता है, हमें तो लगता है वो। हाँ जी, वो सबको अलग अलग लगता है, तो मेरा अलग मानना है, तो मैं अपने मानने में स्ट्रांग रहता हूँ। करेक्ट। नहीं, ये जो अभी सर ने आपको कहा है, ये हमको हर वक्त उनसे सुनने को मिलता है यहाँ, और वो यही कहते हैं कि तुम्हारी जब स्वॉट एनालिसिस करो तो टी को सबसे ऊपर रखो और फिर उसके बाद सोचना शुरू करो। एक बात ये भी कि ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है दर्शकों के लिहाज से, एक न्यूज जॉनर है, एक क्रिकेट जॉनर है, और इधर जब न्यूज को ये कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, वरुण मैं ये भी जानना चाहता हूं, तो क्रिकेट का अमलगमेशन आप इसके साथ कैसे देखते हैं? उस लिहाज से जरा इस कोलैबोरेशन को समझाएं। यही मैंने बोला ना इन द वेरी बिगिनिंग, दैट cricket is part of every Indian. News is the reflection of individual's life, the citizen's life. And cricket, entertainment, politics, these are the three biggest contribution to any national news or any local news. So there's a natural fitment. And as I said, that this time I think IPL is larger than just cricket, given the COVID situation. And I definitely hope that while the IPL is on, the IPL vaccine, as people are going to enjoy it, the real vaccine also will come out of COVID, and then we'll get back life as normal as it was before. One small question, Varun ji, and then you can talk to Ranjit ji directly. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ब्रांड्स के बारे में कहा जाता है कि इनको जब साथ में लाते हैं एक तरीके की मैरिज होती है,
उसमें यह भी देखा जाता है कि कुंडली मिलान हो रहा है कि नहीं। जैसे बगैर शोर के राजस्थान रॉयल्स ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, TV9 भारतवर्ष ने उसी तरह बगैर शोर शिखर की ओर का सफर तय किया है। क्या आपको कुछ एक ट्रेट्स एक जैसे दिखाई देते हैं? हाँ, that is absolutely correct, Dinesh. As we said that their focus on CSR, that is a strong alignment. And as you are saying that they were the underdog and they became the champion in the first IPL. And we also were not considered, our national channel, while our regional channels were number one. We were not considered, we were considered as a fringe player just before lockdown, and we became, we now are figuring out one of the top, amongst the top 3 or 4 channels. So there's a fitment of mind, and I think that we would add the Indian-ness to their team, hopefully in terms of mobilizing the fans. And so that's about it. Now, I don't have many questions. I mean, I have several questions. मैं आपकी इस बात को एक जरा से मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। भारतवर्ष, ये जो है, ये जो एथोस है, ये जो एहसास है, उसको ले जाना और ऊपर, ये TV9 भारतवर्ष का मोटो है जब ये कोलैबोरेशन सामने आता है। और ये एक तरफा संवाद नहीं है। आप संजू, रॉबिन आप और रेयान आप, साथ में रंजीत, अगर आप इधर कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। वरुण से अगर कोई बात करना चाहते हैं तो रंजीत आप। हाँ जी, I'm happy that Varun, you started in English. You know, my Hindi is not very good, so I'm not very expressive. But now that I've understood there are some creative licenses one can take. If the CEO spoke in English, then I will also speak. I think it's very important to understand what a made-for-each-other brand is like. There's an emotive content to it, and there's a rational content in any brand. I think the rational content, let's talk about it. I think the rational content starts from winning from anywhere. And I think that's the kind of slogan that would be applicable to such a wonderful channel like yours, but equally to us. So I think we're down, but we're never out. And I think this is really what guides your TV channel. So that was one of the first attractiveness that, that attracted us. Two is that we get into trouble sometimes. And I noticed that TV9 also has got into trouble sometimes. So it's good. We fight our way out. But to be in trouble, you have to have that little bit of love and mischief life to actually survive. Because there's no fun, there's no sort of life. So fun, knowledge, and money. And I think these 3 rational things drive TV channels: fun, knowledge, and money. Second part is on the emotive side. I think you appeal to people's hearts. You appeal to people's hearts because you tell them what the heart wants, and you're trying to be rational and honest in giving news rather than only views. So I think we also give our cricket that kind of dimension. So we have a very big emotive crowd of people who like Rajasthan Royals for all the wrong things that we did, and for all the right things that we did, and for all the wrong things we were accused of more than they did. And I think we've always come out champions like that. So this emotive and rational marriage is to me a very important one with this. And I'm really hoping, looking forward, that we learn from each other. But I can tell you, knowledge, money, and fun actually will drive this whole partnership. The more fun we have, the less money we have, and the more knowledge we have, I think we'll be richer at the end. क्या बात है। और क्या ये मुझको लगता है ये सिर्फ इस कोलैबोरेशन के लिहाज से नहीं, ये जिंदगी का भी फलसफा है कि जब कोई डिसीजन आप लें तो उसमें आपका जो भावनात्मक पक्ष होता है उसको तो आप ध्यान में रखते ही हैं, लेकिन तार्किक पक्ष को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है कि नहीं। और यही शायद वरुण भी कह रहे थे कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कमजोरियां कहां हैं और उस पर काम करना चाहिए, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। नॉलेज और मनी, जाहिर है ये नई इकोनॉमी है जहां नॉलेज के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं और इसको नॉलेज इकोनॉमी इसीलिए कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं रॉबिन, आधी क्रीज तक आकर आप पहले ही तय कर देते हैं आपके इरादे क्या हैं, किन इरादों के साथ उतरने वाले हैं इस बार आप इस चैंपियनशिप में? देखिए दिनेश जी, ऑब्वियसली जब हम खेलते हैं तो अगर हम जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं तो फायदा नहीं है कुछ। तो बिल्कुल इच्छा ये है और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग चैंपियनशिप जीतने के लिए खेलें, उस इंटेंशन से खेलें और उस बिलीफ से खेलें, क्योंकि वो कन्विक्शन, वो यकीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बस कोशिश करूंगा कि अपना जो एक्सपीरियंस है मैं सबके साथ शेयर करूं, और जो भी टीम को चाहिए मेरे साइड से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो टीम को मैं दे सकूं, और जितना भी है मेरे में मैं 100% दूंगा। तो बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, जैसे हम कहते हैं। तो
कोशिश हम हमारी यही रहेगी कि जितना अच्छा खेल सकते हैं खेलें, एक साथ खेलें, टीम की तरह खेलें, और जीतें तो टीम की तरह जीतें, हारे तो टीम की तरह ही हारे। क्या बात है, आमीन। आपकी दुआ, आप ये दुआ हो जाए और ये कबूल हो। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं वरुण की अमूमन जैसे अब मेमोरी क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, उनकी याद में रहता है कि कौन कहाँ किस तरीके से बैठता है या अंगों को रखता है और उस हिसाब से वो शेप ले लेते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये मेमोरी कि आपने कभी एक बड़ी चैंपियनशिप जीती थी, इस तरह के प्लेयर्स जब आपकी टीम में खेल रहे हो, इससे भी फर्क पड़ता है क्या? I think it makes a huge difference. आपको याद होगा दिनेश, you were there, no, you were not there. So when I first joined, I was doing a town hall downstairs. We were, I think, number 8 or number 9 news channel then. Because most of the news channels in our group are number 1 regional channels. So I told them that the destiny is decided where you want to go. It's a journey, or how long it will take is the question, whether is not the question. We have to be in the top 4 or top 2 or the top channel. So they said, how will you make it happen? I said, first you have to believe. So these winners being in the team, that makes that belief set in. That ये लोग सोचते हैं हम खेल रहे हैं जीतने के लिए, हम फाइट करने के लिए नहीं खेल रहे क्योंकि इन्होंने जीत चुका है बहुत सारे चीज। तो ये माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है जब ये विनर्स लाइक दैट और द स्टॉलवर्ड्स लाइक दिस people who play, who have been used to winning, who doesn't believe that we can win, who has already won. He just wants to win again. Any of your questions from... No, Ranjit, I just have one small, it might just be an elementary question. I think the teams were formulated sometime in October, November, all the IPL teams, and when we are bidding for a team, when you are deciding your team structure, possibly you have kept the Indian pitches in mind. The pitches in Abu Dhabi and Dubai, are they going to be any different? I mean, will it come as a challenge, or the current composition of a team is actually more conducive to those pitches? Actually, to put it this way, I think most cricketers, they are the people who play. And when you ask them, they're used to playing in different environments. If it's disadvantages, it's disadvantages to all the cricketers. But I think there is no disadvantage, especially we're a desert country. And Rajasthan Royals actually comes from a desert, which is Rajasthan. So if at all, meaning I think this is very favorable to us to go to another desert like the UAE, and actually, hopefully, it will be advantage Rajasthan Royals all the way from a desert. But just to give you an idea, the 3 places we're playing, Sharjah, Abu Dhabi and Dubai. Dubai and Abu Dhabi are similar. They are lower scoring wickets. But Sharjah, I played there in 1989 with Wills International. And it was really an entertaining round because sixes come like the rain and monsoons. If there are no monsoons in Dubai, it will be with the cricket ball in Sharjah for sure. So it will be fantastic to see that. So I think to answer your question, when we choose the team, we choose a team which is adaptable, which is understanding, and which actually has the understanding is the team that wins. So we will adjust the team according to the sort of pitch and the climate, etc., etc. Not to say that we have all the advantages, not to say that any team has all the advantages. So let's see what happens. I'm hoping that it's not a big disadvantage. Of course, who would forget the Desert Storms, those 2 innings of तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। इसी में एक सवाल मैं जो आपने कहा उसको और एक्सप्लिसिट तरीके से पूछ लेता हूं। संजू, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली टीम जो रही, उसके कुछ खिलाड़ी आपकी टीम से खेल रहे हो, क्या माइंडसेट में इससे फर्क पड़ता है, अप्रोच में फर्क पड़ता है? जरूर भैया, जैसे हमारी टीम जैसे ऑन द पेपर्स देखते हैं तो वन ऑफ दी बेस्ट टीम होगी आईपीएल में। तो जैसे आपने बोला वर्ल्ड चैंपियन से 3 लोग हमारे, उनके इंग्लैंड के सबसे बेस्ट प्लेयर्स हमारी टीम में खेलते हैं। तो सब कुछ मिला जुला के देखते तो हम भी आईपीएल चैंपियनशिप जीतने लायक की टीम है। तो बस वो टाइम का फर्क है कि हमने पिछले 2 साल जितना हमने सोचा था उतना अच्छा किया नहीं, मगर हमें लगता है कि ये साल हम अपना मैक्सिमम जीतेंगे। चलिए, अब ये रयान से मैं एक और सवाल। रयान, आपने गोल क्या सेट किए हैं? कहते हैं कि गोल सेट करना बड़ा आवश्यक होता है, तभी आप उनको अचीव करते हैं, उतना नहीं तो उसके आसपास। आपने क्या सेट किया अपने लिए? मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स रखूं तो मेरे से होते नहीं,
तो मैंने एक ही गोल रखा है कि मेरे को इंडिया टीम खेलना है, और बाकी जो भी है, ये आईपीएल हो रहा है या फिर कुछ भी मैं खेलता हूँ डोमेस्टिक, मैं बस फ्लो के साथ जाता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मैं उसको खेलता हूँ, बाकी ज्यादा सोचता नहीं मैं। बहुत बढ़िया आंसर है रेन। और आप मतलब सोच रखो कि अगर आप तुम इसमें आईपीएल इज योर स्टेपिंग स्टोन टू नेशनल टीम, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को हुआ है और हम सब इंतजार करेंगे। और ये जो हल्ला बोल तरीका है इनका, हल्ला बोल के एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना, उस एंथम के साथ आगे बढ़ना, जरा इसको लेकर भी रंजीत साहब से मैं पूछ लूं। रंजीत साहब, ये समराइज करता है क्या एटीट्यूड को राजस्थान रॉयल्स के? हल्ला बोल तो यही है कि हमारा जो सेलिब्रेशन हो, कि पूरा जो मैंने enjoyment का बात है कि come to this, come and join us and actually celebrate with us. And it is not in any way jeery. It is not a negative statement. For us, it is actually all about every player, whether you go out or whether you play well, whether you take a wicket or not. For us, it's a celebration. So we are always saying, Halla Bol, come join us, come and enjoy ourselves, come and enjoy everything that we do. You can see a very nice dynamic that we've got somebody from Kerala and we've got somebody from Assam. Both of them are the top players of their states. So while we are actually celebrating Jofra Archer and Butler and Stokes, we must celebrate the fact that we've got two young players even, and always believed in, other than when we got a little sort of tormented by having to leave the tournament for 2 years. We've really backed us from states which are not necessarily cricketing states in the BCCI definition. So therefore, you can see from Assam to Kerala, we have the best. And I was talking to Robin earlier, but he's a diplomatic guy. I was saying, Robin, what were you doing all these years, wasting your time with other franchisees? He made many trophies, but this is his home. He should have been here much earlier. I have no idea what he was doing, because his attitude, it doesn't matter whether we win or lose. At least, at the end of the tournament, we're doing jappi puppy and kissing each other and saying that we love each other, Finally, in life, journey all about, these trophies will come and go. Who remembers who won the Cup or the first World Cup in cricketing history? Difficult to remember. Of course, I'm sure we do. But the point is, you remember this love and affection and friendship that we develop, even with our partners like TV9. Last year, we had front of shirt JK and Lakshmi. It was a difficult parting for us, It wasn't the easy parting, but it was like changing teams. It is like changing side. We still respect them and still have a lot of time for them. We invite them for all our meetings, all our webs. So we're developing a bond of friendship all along with one idea to promote sport and promote a healthy India. I think that's really the moral duty that we have in promoting about this. Sorry. ग्रेट। अब ये एक चीज और मैं समझना चाहता हूं आपसे और इसके साथ वाइंड अप करूंगा वरुण, कि ये बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जब इस तरह के खिलाड़ियों का नाम हम लेते हैं, इंडियन और बाहर से आ रहे खिलाड़ियों का ये अमलगमेशन, आप जब ये ग्रुप एक सीईओ के तौर पे हैंडल करते हैं जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस के न्यूज चैनल्स हैं, ये क्या ज्यादा बड़ी टीम स्पिरिट होती है जब इतने अलग अलग तरीके के लोगों को लेकर आप टीम बनाते हैं? Yes, but there's a simple way out. Maybe Ranjit would be able to add to that. When you have different kinds of people drawn from across different kinds of states, in our case, and for them, various parts of the world, all the leader has to do is to align the objective of the team and the individual players, which is what Robin just said, that when he gets into the team, he's part of that team, and everybody's objective is aligned. So it's like everything moves. I mean, it then becomes a multiplier effect. I mean, 2 plus 2 plus 2 become 10. So therefore, it is not a challenge as long as the objective is kept in mind and all of them are focused into that objective, which is what they do. Ranjit, if you wish to say anything. I agree with Varun, actually. If I may say something here. Dinesh ji, can I say something? Yes. Yeah, please go ahead, sir. Please. Sorry. Is that I think what has been said just now by Varun is very important. See, finally, if our franchise should be known as a franchise of love and affection, where you're allowed to play your game and not actually, I gave an interview in UAE in which we said that not punitive in fear. So, and punitiveness is not good. We may have other reasons for a dropping or a weaning away of players, but we are not punitive. And if you are known as that,
at some point in time, the teams are all similar, because in terms of their playing abilities, they're competitive, they're all excellent players. Every team is fantastic. That's why it's such a carnival of cricket and such a carnival of sportsmanship, such a carnival of winning and failing and losing and crying and laughing. That this whole system of actually being yourself and developing a core value with an objective to win is much better than only objective to win. And I can tell you, that's really what we are trying to promote, just like TV9. You all are winning with different languages, different cultures, north, south, east, west, everywhere, primarily because you are trying to get the symbiosis of actually, I think, love, working together. I can see all of you are young, you all are smiling all the time. There's the 2 or 3 people that I've said. I think, and that's what you want in life, Once you promote like that, then only you can see success. And that success will be ultimate happiness and good health, Absolutely. Thank you so much, sir. Thank you so much. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, रेयान आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, संजू और रॉबिन आप कमाल करें, ये शुभकामनाएं। और वो जिस बात की अभी मिसाल दे रहे थे कि इस बार तो डेजर्ट में रन बरसते हुए नजर आएंगे, वो रन बरसेंगे उधर। और इधर ये जो कोलैबोरेशन हुआ है TV9 भारतवर्ष का राजस्थान रॉयल्स का, हम अपने न्यूज के दर्शकों को ये बता दें कि अगर उधर एक विकेट गिरेगा इंस्टेंटेनियसली आपको यहां खबरों में पता चलेगा, अगर उधर बाढ़ आएगी रनों की तो आपको पता चलेगा, और अगर पतझड़ होगा विकेटों का तो भी आप फौरन जान पाएंगे। और इसी बहार और पतझड़ के बीच का फलसफा तो जिंदगी है। तो आइए हल्ला बोल के साथ इस नोट पर इसको यहां समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिगल बजा के, ढोल बजा के, रंग जमाने आए हम अपना सारा